Hello children, today we are going to visit an exhibition. The exhibition has been organized by Sunflower English High School, where I am working as a coordinator and teacher. Sunflower English High School was established in the year 1977 by our founder principal Mrs. Kusum Gupta, and I am very much thankful to the management team, Mr. Vijay Gupta, principal, Mrs. Anjali Gupta, who has organized such a big event, science exhibition. So let's visit the event. चलिए मिलते हैं event में. So we have entered the school now and let's have a look what they have prepared. चलिए देखते हैं क्या क्या बनाया उन लोगों ने. And now we are going to take the feedbacks of the teachers starting from the principal of the school. Let's come. So good morning. So due to COVID, for 2 years our children were not having a fresh mind. When the school has opened, we have decided to have a small science exhibition for the children to freshen up their minds. So the children have started making craft works, project works, and very beautifully, and we have taken their pains and they have done with their efforts. So we have seen that the children's, their talent have been hidden. So now it has come forward, and so I hope the children develop this way their talent and come forward with their good hope. So I am very happy that our students have completed their work very sincerely as per the guidance of all teachers, and really they have done very well. There is much of their effort. They have made the models and other scientific projects without any hesitation, and they are showing their performance. I hope they will show their performance and demonstrate with full confidence. So today we are having science exhibitions of SFA school. Students have learned lots of hard work and they have made such a good models and all, and we are very satisfied. All the students have worked hard and they have presented their models nicely with the hard work and the cooperation of the parents, and it is a grand success for all of us. The students are done very nice.
they have take the pains a lot, and the parents are also excited to see all the things. Today is the science exhibition, so all the students are very nice activities and good models and all. ষ্টুডেণ্টে অতি সুন্দৰকৈ বনাইছে ছায়েন্স আৰু ছ'চিয়েল এক্সিবিশ্যনৰ কাৰণে অতি সুন্দৰকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে লগতে তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ সজাই আনিছে খুব আনন্দ লাগিছে All the students were preparing own science project or social science project, including that they was go smoothly. Today we are observing science exhibition in our school, and we are very much excited. The students are also have taken a lot of pain, and not only the students, the teachers also have guided them. And I think this kind of exhibition should be held every year, so we can find out the hidden talent of the students. My best of luck to all my students, because the students, they have made so much nice models and all, solar panel, volcanoes, wind power system, water cycle, all types of models here I have seen. So thank you all and all the best. To commemorate the Science and Technology Day that was on 11th of May, our students of Sunflower School has taken pains to make the exhibition a huge hit. So I am very much pleased with their effort. We have science exhibition in our school. The students participated very nicely. They did very good projects. The parents are also satisfied, and we teachers are also very satisfied. The main objectives of organizing the science exhibition are the promoting the interest in science and technology among younger generation. I am glad that our school can organize this exhibition successfully. Now I congratulate the students for their great effort and the parents for their massive support of the exhibition. This is the anemometer which tells the wind speed and wind progression. Direction of the wings. This is the model of soil profile. It have 5 layers of soil. This one is humus, topsoil, subsoil, weathered rock fragment, and the last one is wet rock. If you want to get Rainwater harvesting is the collection of stories of rainwater. Not eat obedience around the sun. shown how wireless connection is done. This is weakness, it generates electricity. So water goes solar panel, the energy is getting the battery. Those in yes. Yes, good morning sir. This is rainwater harvesting. The rainwater collects here and then goes for filtration, and then finally after filtration it goes to well. Water has higher density and lemon is low density. So lemon is protein. In normal water is low density and lemon is higher density. So lemon has gone down. so nice, but I'll keep it up. Control transit invisible fire. Salt water. You can detect when it's put there, it will come out. This is normal water. The normal water is
गार्जियन बहुत एक्साइटेड है। इन लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स बनाया है, जो साइंस एग्जीबिशन के लिए बहुत खूबसूरत बनाया है। तो चलिए लेते हैं गार्जियंस के फीडबैक्स। अच्छा, सारे बच्चे अच्छा बनाए हैं। ভেৰি গুড ছাৰ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। চবৰে ইমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বহুত ধুনীয়া বনাইছে, ভাল লাগিছে চাই। सर वो एक तो जैसे फूड्स का जो नीचे में दिखाया ना, बहुत बढ़िया लगा। बाकी सब बच्चों का बहुत बढ़िया है। सभी बच्चों ने अलग अलग बहुत अच्छा बनाया है, देख के अच्छा लगा है। नहीं, बहुत अच्छा है, বহুত আচ্ছা লাগে, ভাল লাগিছে, ভালে হৈছে। ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কষ্ট কৰিছে, ভাল লাগিছে চাই। हाँ, सब आया, अच्छा लगा बहुत। सब बच्चे लोग अच्छा से बनाया, सब कुछ अच्छा लगा। देना जरूरी है, इतना 2 दिन से लगे हुए हैं ये सारे बच्चे, और जाके कंप्लीट हो। बहुत बढ़िया, सबका यूनिक है, क्रिएशन जो भी सब यूनिक है, काफ़ी अच्छा लगा। तो अच्छा लग रहा है। सारी बच्चा इसमें जो सारी मॉडल बना है, एक अच्छा थिंग है। इसमें से नया नया जो थिंग्स है वो उठ के आएगा फ्यूचर में। हमारा इसमें काम सोसाइटी में काम पे आएगा। अच्छा है। इसमें से जो मेंटल डेवलप हो रहा है, वो जो कुछ अपना जो थिंक कर रहा है, या तो इसमें से जो कुछ भी वो सीख रहा है, इसमें से उसका तो डेवलप होगा। ধুনীয়া বনাইছে চবে। All of my students are very good, very nice experience. I am very happy to see all. Thank you all of. आगे बढ़ो, अच्छा करो और इससे भी अच्छा करो। Very good, very good. हाँ, हमारी तरफ से सब खुश रहिए और आगे बढ़िए आप। ভালে লাগছে চাই পেলাই, বহুদিন দেখাও নাছিলে, এইটো ঠিকে আছে। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबको पता चला कि बच्चों के अंदर कितना टैलेंट है। मतलब इससे पता चलता है ना कि बहुत मेहनत किया बच्चों ने, बहुत मेहनत, किसी का भी खराब नहीं बोल सकते, सबका बहुत अच्छा बना है। I am very much glad to participate in this event. The student is so very much hardworking. अच्छा बनाया सभी बच्चों ने, मैंने देखा पूरा। शायद एक रूम बाकी रह गया मेरा भी देखना। अगर जहाँ तक है थीम अच्छी बनाई हुई है, सबकी थीम अच्छी दी हुई है, और प्रोजेक्ट भी जो बनाए वो भी बहुत अच्छे बनाए हैं। अच्छा मेरे से माइंड बनता है, जो आगे और अच्छा होगा, दिमाग बनता है, बहुत अच्छा लगा सभी। जितना बच्चा बनाया ना, सब बहुत है, सब अच्छा है, सब एक से एक है। এক্সিবিশনটো বহুত ভাল হৈছে, মানে ভাল লাগিছে, আহি চাই ভাল লাগে। इसमें इतना जो कोरोना चला था, कोरोना काल में हर बच्चे घर में थे एक्चुअल में, फिर भी आप लोग यहाँ पे आए और आप लोगों ने इतने कम टाइम में जो काम किया वो बहुत ही अच्छा किया है। सबने बहुत अच्छे से बनाया है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इतनी जल्दी ये सब कुछ किया है। इसमें अभी टीचर्स का भी काफ़ी अच्छा सहयोग है और आपका भी, क्योंकि बच्चों के बगैर क्या होता है, स्कूल एकदम अधूरा होता है। अगर बच्चे नहीं होते ना तो स्कूल की कोई मतलब वैल्यू नहीं होती। इसलिए तुम लोग क्या हो, यहाँ का आधार हो, आधार मजबूत होगा तो स्कूल अपने आप मजबूत होगी। আজি ল'ৰা ছোৱালীৰ ছায়েন্স ৱৰ্ল্ড ডে হয়, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ বস্তু বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু বহুত ভালো হৈছে। আগলৈকে যেন তেওঁলোকে ইয়াত চেকিন ভাল কৰিব পাৰে তাৰে চেষ্টা কৰক। আৰু স্কুলৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে মানে বহুত তেওঁলোক মানে গাইড কৰিছে, এইটোৱে আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে, আৰু তেওঁলোক আগলৈ আগবাঢ়ি যাওক। All the students have worked very hard, a lot of effort has been given. A little hesitancy is there, but you will make up, guys. So this is the beginning. Once you understand how to meet people, all of you are stressed from morning, pressurized, nervous, tense, right? When you meet different people, different parents, in your real life you'll meet so many people. You'll have to explain so many things, yeah? So be prepared for now, from now. Fine? Don't give up, guys. Yes, everyone has done very good. I'm really happy and hope to see you again. Yeah. And संतौर स्कूल का स्टाफ प्लस गार्जियन भी हूँ। आज साइंस एग्जीबिशन जो बच्चे ने किया काफ़ी अच्छा लगा। सभी गार्जियन आए, देखे, बच्चे ने बहुत अच्छे से बनाए हैं और टीचर स्टाफ सभी का हेल्प से बहुत अच्छा हुआ है। We were very excited about this project and exhibition, and now we are very happy because of Because this thing. some parents, all of our parents have come and appreciate with this our project And and we all. learned too much things Yes. according to this. So we thanks our school and our coordinators. Thank you, sir. Yes, sir. Our parents has improved our
We were very excited and happy to do all this project and exhibition. And we are feel proud of us because our teacher is help us. Our confidence level is doing high, and we all have done very well. Then our parents has also Appreciated us. We were very excited for this exhibition. Our parents, teachers, and everybody supported us very well for this event. We are feeling so happy. Teachers also saying that from next time it will be very beautiful. Our teachers guided us very well for this exhibition, and our parents also helped us. We are proud to be students of Sunflower English High School. तो हम लोग अलग अलग क्लास में जाके देखे कि किस तरह का इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट बनाया है। बच्चों ने बहुत पेंस लिया है और बच्चों के साथ साथ सनफ्लावर इंग्लिश हाई स्कूल के हर एक टीचर ने जो गाइडेंस दिया है मानना पड़ेगा। और गार्जियंस को भी थैंक यू, जो गार्जियंस ने इतना सुंदर से अपने बच्चों को हेल्प किया। तो सबके साथ सबका साथ जहाँ होता है वहाँ काम भी अच्छा होता है। और इसलिए आज का एग्जीबिशन बहुत सक्सेसफुल हुआ। गार्जियन के भी फीडबैक अच्छे मिले और मैं सब गार्जियंस को, सब स्टूडेंट्स को एज ए कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्कूल थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग इन द अरेंजमेंट ऑफ दिस एग्जीबिशन। थैंक यू। तो ये था एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन सनफ्लावर इंग्लिश हाई स्कूल में हुआ था। वीडियो आपको अगर पसंद लगे तो क्या करना है हमें?